Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. Of late, I've seen a lot of people are watching my videos, but people are not subscribing. As a creator, your likes and subscription is the only motivation for a creator. So I'm planning to create a lot of learning videos and all, but my subscription levels are very low. That's the reason I'm just holding off. Once my subscription base increases, I'll promise that I'll create a lot of learning contents which no influencers or YouTubers have created so far. Friends, I also wanted to emphasize on one point that I can match with any of the best market analysts in the Indian market. So, and if you have any questions, please go and check my video on 20th of September, wherein every influencer saying that okay, Nifty will go and touch 23,000, 24,000, and all. That is a point I predicted that Nifty will make an 80th in the near time. From the very next day onwards, Nifty started its upward journey, and you can see that 2 days ago Nifty made a fresh 80th. This is the power of prediction. I'm not wasting the viewers' time by talking about things which has no relevance about our stock market. तो स्टॉक मार्केट में क्या है दोस्तों, हम लोग सब आया कुछ पैसा कमाने के लिए आया, तो हमें स्टॉक मार्केट और एनालिसिस से मतलब है। तो दुनिया भर की चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। आपका जो ट्रेडिंग फोकस है वो शिफ्ट हो सकते हैं। मान लो मैं आपको डेली बेरिश 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 बोल सकते हैं, आप डेली जाके शॉर्ट करेगा, पैसा खो देगा। और मैं आपको डेली बुलिश 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 कहेगा तो आप जाके लॉन्ग लेगा, लॉस में निकल सकते हैं। हमें क्या न्यूट्रल रहना है। मार्केट जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए हम मौका ढूंढेंगे। हमें कोई बुलिश और बेरिश सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं। हम ना बेर है ना बुल है। हम लोग है मार्केट जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरह हम कुछ पैसा कमाने के लिए कोशिश करें। चलिए, so this is the pre-market report for 1st December 2025, that is for Monday. So friends, in this video we are going to cover FN analysis, post market and pre-market chart reviews, top gainers, losses, technical view outlook, and at the end we'll also discuss about the levels for Monday. So we are going to cover everything in this video, including crude, gold, silver, global and local cues. So let us start from our last trading that is on 28th November, last Friday. What happened on our market? So it was more or less a sideways market because the retailers' position was bearish, and opening itself, big players made a big dip in our market. Thereafter, a retracement, then sideways. Only option sellers must have earned some money. Option buys, it was not a good market at all. Yeah, let us try to understand it from the chart itself. Start our analysis from Nifty. Friends, if you look Nifty open a gap up, on last Friday, and from there it immediately went for a fall. See here, so it opened a gap up. ज़्यादा गैप अप नहीं था, 10-15 पॉइंट का गैप अप हुआ था। वहां से सीधे नीचे। ये क्यों नीचे आया? क्योंकि डाटा बेरिश था, रिटेलर का पोजीशन बेरिश था, तो इसलिए मार्केट को एकदम एक झटके से 26,172 तक आया। वहां से फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर क्या पूरा दिन साइडवेज चला गया। चलिए, हम लोग मंडे के लिए क्या देखना है, तो आप अपना चार्ट में एक ट्रेंड लाइन बनाना। जब तक मार्केट है ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप इसमें बुलिश नजरिए से देखना। जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तब जाके आप बेरिशनेस लाना है। तो मंडे के लिए क्या लेवल है? मंडे के लिए अभी क्या हमारा जीडीपी डाटा अच्छा है, तो उम्मीद है कि एक बड़ा गैप अप खोलने का उम्मीद है। हो सकते हैं निफ्टी 310 के ऊपर खुल जाएगा, जो ऑल टाइम हाई के ऊपर। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर खुल गया तो कुछ करना ही नहीं है, तो हमें एक रिट्रेसमेंट इंतजार करना है। जब भी स्कैल्पिंग शॉट वगैरह कर सकते हो, स्कैल्पिंग शॉट के लिए सोच सकते हैं। और रहा बात नीचे के लिए, जब तक 200 होल्ड है, 26,200, आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते, तो वेट करना। तो एग्जैक्ट लेवल बोलो तो 190 है, 26,190 to 180 लेवल का, वो नीचे ही शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी में हम लोग चेक कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी में बताने के लिए कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन क्या है, पूरा रेंज मोड आप देख सकते हैं, पूरा रेंज रेंज मोड है। तो जब तक बैंक निफ्टी 59,700 के ऊपर, इसमें शॉर्ट नहीं करना। तो लॉन्ग के लिए मेरे हिसाब से आप 900 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। मेरे हिसाब से ये 60,000 के ऊपर ही खुल जाएगा मंडे को, देख लेना। तो सेंसेक्स में हम लोग देखेगा तो सेंसेक्स सेंसेक्स इज ऑल्सो, इट इज ट्रेडिंग नियर टू इज 200 EMA। तो जब तक ये 700 के ऊपर है, इसमें भी बेरिश भी नहीं लाना। आपको अगर लॉन्ग करना ही है तो मेरे हिसाब से ये 900 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना है। मेरे हिसाब से मंडे को ये 86,000 के ऊपर ही खुलने के चांसेस है। मिड कैप निफ्टी में भी हम लोग देख लेते हैं। इफ यू लुक एट मिड कैप निफ्टी is also in a consolidation phase. Most of the indices are in a consolidation mode. So mid cap nifty long, you try only above 14,100 and shorts below 1430 you can see, or 14,000 you take it. इंडिया विक्स में देखा तो इंडिया विक्स और नीचे गिर गया, लेकिन नीचे से थोड़ा सा रिकवरी हुआ, तो इसलिए कि जो पी प्रीमियम को बढ़ाने के लिए, ताकि ये सेल कर कर जाए, तो बड़े खिलाड़ी लोग स्पेशली प्रोस। अभी के ट्रेड डील का अनसर्टन अभी भी बाकी है, और हो सकते हैं मंडे को ये ऊपर जा सकते हैं। एक बार नीचे आएगा तो जितना भी सी वायरा का प्रीमियम है प्रॉफिट देने के लिए, उसके बाद ये ऊपर चल सकते हैं। इंडिया विक्स को देखते रहना। तो एक और बात है, जो निफ्टी में एक और चीज आप देख लो। निफ्टी में आपको EMA लगा देता हूँ। If you look here, so this trend line is exactly matching with the 200 EMA. And always look for EMS. If it is going below 20 EMA, then we short. चलिए हम लोग अपने शीट में वापस चलते हैं। So USD INR, and this is the most concerning thing for the Indian market and our economy. So last Friday, IMF has downgraded our rupee as a volatile currency. It was a stable currency so far, but they have reduced. It is a negative news for our currency. Nothing to do with any political bias or anything. That is a fact. We have to admit and go. And there is no point in telling that, okay, so why IMF has downgraded and all. There is no point in arguing on that point. And crude, it will be sell on rise, and some spike happen, but this will be sold off soon. In gold and silver, needless to say that this is going in a different territory, ultra bullish territory, because all the big players, they've shifted their focus after this crypto crash from crypto market to gold and silver, all the commodity markets. So a lot of volumes are there in gold and silver, especially the commodity market. You can see silver, see the almost 6% of rally in a single day. This is the highest ever rally happened in silver. Gold also, it is rallying non-stop, and it is not even ready to come down. There is another thing I wanted to share with you guys, that Morgan Stanley conducted a survey among all the investors and the central banks and other people, all the high net worth individuals and all bigger institutions. Everyone, 36% of the respondents, they were expecting gold to reach $5,000 in near time by next year. So, and with that, gold is rallying, silver is rallying. If you go and short gold and silver, you are going to lose money, because in MCX, even if gold or silver falls, you will not get that benefit because our rupee is falling. So the price will not come down. So better avoid shorting in gold and silver. A correction can happen, but we don't know when that happen. For that correction, if you try to short, you are going to lose all your money. And let us look at some important data and events. The main important data was the GDP data, and the GDP data, it came above the expectation. The expectation was only 7.3, but it came 8.2. And the forex reserve also came little lower, but our market hardly reacts to that. So these are all the positive news. But if you look at the negative side of it, our physical deficit from April to October widened. Okay, so this is widened. Previous year it was 46.5, and increase. Why?
52.6 आ गया. फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होना हमारे इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए अच्छा नहीं है. So government is aiming to narrow the physical gap to 4.4% of GDP in the financial year from 4.8 an year earlier. लेकिन क्या है, ये हुआ नहीं. गवर्नमेंट का जो एम था 4.4 तक लाया, लेकिन ये आप देख सकते 6% के ऊपर इंक्रीज हो गया. तो ये अच्छा नहीं है. और ये है कि जीडीपी का चार्ट भी आप देख सकते हैं, तो ये अच्छा है. तो डाटा अच्छा आया. तो लेकिन क्या है, इसमें कुछ कुछ नेगेटिविटी है कि मार्केट श्रग ऑफ कर सकते हैं. सो यू डोंट लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ ओनली इट, बिकॉज गवर्नमेंट इज पब्लिशिंग. लॉट ऑफ पीपल कैन डिबेट दैट द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट हैज पर्पसली reduce it and to show our GDP growth. But data, after all, it is a data only. So let us go and observe the positivity. Negativity can be there when market react to negative, will go negative. This is the FnO data for 1st December, and let us start from index futures. If you look here in index future, ज़्यादा कारवार नहीं दिख रहे, तो हल्का सा कारवार है. But I would say this data is mixed to bullish. Index call में यहाँ गड़बड़ हुआ. रिटेलर 1.13 lakhs बाई कर गया, तो अभी इसका नेट शॉर्ट ओनली 70,000 बेच गया. FA and pros both are net sellers in the index call. So I would say this data is mixed to bearish. Index put, here also retailers gone bullish. They've added an additional 57,000 of put shorts. So that total reached to 3.32 lakhs, whereas FA and pros, they are going bearish. But pros ka data ज़्यादा नहीं है, and FA 54,000 है. So this data is ultra bearish, I would say. Stock future is also mixed data only, so I would say this is mixed to bullish. Stock call, retailers are going once again ultra bullish in stock calls. They are going ultra bullish in stock put as well. So I would say this stock call data is ultra bearish and stock put data is mixed to bearish. तो यहाँ एक चीज देखने वाले है, एफआई के ज्यादा पोजीशंस नहीं है. जितना भी ये जो शॉर्ट करते जा रहे हैं, ये और बेरिश पोजीशन से ज्यादातर प्रोस का है. So the data overall, if you wanted to conclude, retailers are mixed to bullish in both index options and stock options. FA and pros mixed to bearish in index option and stock options. So, but then what will happen is that sometimes news takes precedence over FNO data. GDP data is one such data. Sometimes it can take precedence over the FNO data. तो मंडे में क्या हो सकते हैं, तो जीडीपी डाटा पॉजिटिव है, इसके कारण हमारा मार्केट गैप अप खुल सकती है. और एक बार ये लोग डिप लेके आएगा, क्योंकि इनका जो पोजीशंस निकालने के लिए अगर बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं फर्स्ट हाफ में आप कल मंडे को. कैश मार्केट में एफए कंटिन्यूस सेलिंग, इन्होंने 3,796 करोड़ सेल किया और टीएनए 4,048 करोड़ का बाइंग किया. बाकी जितना सेलिंग है ये प्रोस का मुझे लग रहा है. Why are exiting? There is a reason, because rupee is depreciating and there is no point in investing in India for FAS. Even if they make profit, rupee is depreciating, they will not get any profit. So we look at some of the top gainers. A lot of stocks are there in the top gainers. Look at the high volume stocks. And if any dip happens in these high volume stocks, you can consider it as a buying. Moreover, on Monday, auto sales data, everything is going to come. If auto sales numbers are good, then M&M buy on dips, all the auto stocks buy on dips, and ये strategy अपना लेना. तो टॉप लॉसर में यहाँ भी बहुत सारे स्टॉक्स है. मैं एक स्टॉक बताऊंगा, एसबीआई लाइफ में. अगर मान लो इसमें कोई भी डिप आता है, तो बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना एसबीआई लाइफ को. बाकी मंडे के लिए मैं इतना शॉर्टिंग के लिए आपको बोलूंगा नहीं. आप ये वॉल्यूम चेक कर लेना, उसी के मुताबिक ट्रेड ले लेना. And technical view and outlook for Monday. So we'll start from Nifty. If Nifty is going below 26,300, then only you short. Why I'm putting 26,300? Because I'm expecting a 100-point gap up. So the moment Nifty is breaking below 26,300, you consider a short. ये स्कैल्पिंग शॉर्ट ऑफ फर्स्ट लेवल आपको
30 पॉइंट मिलेगा, वहाँ से अगर टूट गया तो और 70 पॉइंट मिल जाएगा। जब तक 26,100 होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा। तो पोजिशनली बियरिश होना है तो 26,100 के नीचे ही होना है। लॉन्ग के लिए 26,310 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। तो ज़्यादा इतना बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा है। फर्स्ट टारगेट 350 फॉलोड बाई 400। मेरा व्यू है बुलिश मोमेंटम कैन कंटिन्यू एंड शॉर्ट्स बिलो 20 MA, एंड इफ इट टेक्स रेजिस्टेंस मार्क दिस लेवल 26,333। अगर इस लेवल पे आके निफ्टी अगर रेजिस्टेंस लिया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मोड में रहना मंडे। पीसीआर अच्छा दिख रहा है मुझे। बैंक निफ्टी 59,900 के नीचे, क्योंकि मैं इसमें भी गैप अप दिख रहे हैं। अगर 59,900 तोड़ दिया तो 700 फॉलोड बाई 550 तक आप आ जाना। लॉन्ग के लिए 60,060 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना। तो ज़्यादा टारगेट इधर इधर भी मैं नहीं दिख रहा हूँ। मैं 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स मैक्स टारगेट मुझे दिख रहे हैं। तो मेजर रेजिस्टेंस 60,000, अगर 60,000 तोड़ दिया तो एक आप मूव आ सकते हैं। बैंक निफ्टी जब तक 59,700 के ऊपर है बुलिश नजरिए से देखना। अगर आपको शॉर्ट करना है 20 MA के नीचे ही शॉर्ट करना। और अगर मान लो 60,000 में अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो भी शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। पीसीआर अभी इसका अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स में 86,900 को नीचे ही शॉर्ट करना, आपको 500 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 86,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना, आपको 86,400 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 85,800 होल्ड है सेंसेक्स विल बी बुलिश। में मान लो एक स्कैल्पिंग शॉट आप अगर खोज लो तो 86,100 के पास अगर मान लो ये रेजिस्टेंस ले रहे हो तो आप स्कैल्पिंग शॉट खोज सकते हैं। पीसीआर इसका अच्छा दिख रहा है। मिड कैप में मुझे लग रहा है मंडे को एक अच्छा मूव आ सकता है मिड कैप में। तो शॉर्ट करना है 1490 के नीचे शॉर्ट करना है, आपको 14,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए 14,100 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना, तो आपको 14,200 तक टारगेट मिल सकते हैं। मिड कैप में वीकनेस 14,000 के नीचे ही है, अगर पोजिशन ले अगर वीकनेस खोज रहे हो तो। और जब तक 14,000 के ऊपर है बुलिश नजरिए से इसको देखना। तो पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है। तो मेरा व्यू है मंडे के लिए, सो निफ्टी इज मैनेज क्लोज अबाउट 26,200 ऑन द थर्ड consecutive day, and this is in a consolidation mode. So near term target I am seeing it 26,500. It doesn't mean that it will come on Monday. Possibly with the RBI rate cut it can reach up to 26,500. ये हो सकते हैं आपका जो interim top. माई व्यू इज दैट निफ्टी में डाउन साइड के कैप रह सकते हैं, जैसे 26,200 टूटना नहीं चाहिए, एंड अवॉइड शॉर्ट्स टिल द टाइम मार्केट इज होल्डिंग अबव 20 MA. Strategy go with the market trend, expected dip after making fresh 80s with the gap up due to the bearish FnO data, and from there buy on dips का strategy अपना लेना. Yeah, let us also take a quick look at the global markets. If you look here, in US trading suspended because of the network glitch and all, but US futures closed in good green. As a result, Gift Nifty with the GDP positive data, the Gift Nifty is also indicating 130 points gap up. तो अगर एक गैप अप होता है इसको चेस नहीं करना, तो देखते रहना। और नेक्स्ट वीक के लिए एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। If you look here, lot of data is going to be a data driven week for next week. तो बहुत सारे डाटा हैं, आप देख सकते हैं। तो मंडे को हमारा एक महत्वपूर्ण डाटा है S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा 10:30 को आएगा। अगर इफ डाटा इज गुड देन निफ्टी कैन रैली फ्रॉम देयर। तो ये 10:30 को जरूर है डाटा वॉच कर लेना। एक्सपेक्टेशन 57.4, अगर इसको ऊपर आ गया तो मार्केट बिल्कुल रैली करेगा। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा का शाम को आएगा, एंड यूएस में भी बहुत सारे डाटा आएगा। ट्यूसडे को फेड चेयरमैन जेरोम पॉल का जो स्पीच है उसके मुताबिक मार्केट चलेगा, और एडीपी नॉन फार्म पेरोल वगैरह है, और पूरा डाटा ड्रिवन वीक है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम, एंड फ्राइडे को हमारा इंटरेस्ट रेट डिसीजन है नेक्स्ट फ्राइडे, एंड कोर पीसी वगैरह यूएस में आना है। तो पूरा डाटा ड्रिवन वीक रहेगा, तो एक देखते रहना। So that's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel. If you have not yet subscribed to my Telegram channel, the link is given in the description. You can join. Thank you. Bye.